Hello everyone, welcome to Math Edu. Today we study differentiation, derivative of an implicit function. That is how to find derivative of implicit function. In last video already we have studied the derivative of logarithmic function. Then here the derivative of implicit function, the implicit function and the explicit function. First, if the variable y can be expressed as a function of the variable x, that is y is equal to f of x, then the function f of x is called an explicit function of x. मतलब हम y is equal to, we write the function of x, मतलब y is equal to f of x, means we write this y in terms of x, then this is known as explicit function. Or we write this y is equal to the whole term of x, okay, that is y is equal to x square. Or we separate out the term of x and term of y, then this type of a function is known as explicit function. okay, मतलब y is equal to f of x होता है या y is equal to x square, और ये y की वैल्यू और x की वैल्यू हम अलग अलग लिख सकते हैं. देन दिस इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और दिस आल्सो वी डिनोट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मीन्स दिस y इज इक्वल टू f of x, और दिस फंक्शन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x raised to -3. दिस is a explicit function. Or second one example is y is equal to log x, that is here the term of y and the term of x are different, that is separate out, we separate the term of y and term of x, then this is known as explicit function. Or this y is equal to x cube plus x, this is also a explicit function. But what is implicit function? The reverse way of this, the implicit function means if it is not possible to express y as a function of x or x as a function of y, that is we can't separate the value of y, that is we can't separate the x and y variable, okay, means we don't write it this way y is equal to x square. It is not possible to write y is equal to x square form, or it is not possible to write x is equal to y or x is equal to y square, or it is not possible to separate out the value of x and value of y, or it is not possible to separate out the term of x and y, okay. That is, for example, the implicit function means ax square plus twice hxy plus by square, or there exists a product term of xy which we do not separate x and y separately, okay. That is, here the product term of x and y is present, that's why it is not possible to separate out x and y terms. Or the next one example is x square plus y square is equal to x plus y square. That is, here when we expand this term, then there exists a product term, means the implicit function means the general form of an implicit function of two variable xy is f of xy is equal to 0, okay. That is, there exists a product term of xy such that we don't separate, or we can't separate, or it is not possible to separate out the x and y terms, okay. Then this is known as implicit function. Then how to find the derivative of implicit function means here we have to find dy by dx, okay. That is, there exists a general form of implicit function as f of xy is equal to 0, then we differentiate by using a product rule, and then we find the value of dy by dx, okay. Then here first one example, we solve the exercise 3.4. the question number 1, find dy by dx if root x plus root y is equal to root of x. Then here we have to differentiate this to find the value of dy by dx. Then consider the given example and differentiate with respect to x for the left hand as well as right hand side. Then when we differentiate, that is derivative of this root x plus this derivative of root y is equal to this derivative of root of a. Then we know that root x derivative is 1 upon 2 into root x, that is standard formula. Root y derivative also 1 upon 2 into root y into this derivative of y with respect to x, because y is a function of x, that is a composite function, and this a is a constant and derivative of constant is 0. Then we have to find the value of dy by dx. For that we compare this term is equal to 0, then we get 1 upon 2 into root y into this dy by dx is equal to
to minus time 1 upon 2 into root x. Then in order to find the value of dy by dx, that is we have to transfer this 1 upon term to the right hand, then it is a reciprocal of 1 upon root y, that is it is a divided. When we transfer here it is multiplicative. Then this dy by dx is equal to this minus 1 upon 2 into root x into this, that is numerator term goes to denominator and this denominator goes to numerator, means 2 into root y divided by 1. Then this 2 and this 2 get cancelled, therefore dy by dx is equal to remain is minus time root y divided root x, that is something as minus time root of y upon x. That is what we get the value of derivative as here. The value of derivative is dy by dx is equal to minus time root of y upon x is the value of derivative. Then same thing we next solve the next one example, that is the question number next one example is x cube plus y cube plus 4x cube y is equal to 0, that is which is in implicit form. We have to find the value of dy by dx. Then differentiate the given value with respect to x. Then when we differentiate, that is d dx of this whole the term x cube plus y cube plus this 4x cube y is equal to 0. Then this we know that u plus v plus w, then separately differentiate this term, this term, this term, and when we differentiate here there exists a product term, then to differentiate we have to apply product rule. Okay, then this d dx of x cube plus time d dx of this y cube plus time, we take this constant at outside. We know that we take constant as outside for the differentiation into this x cube y is equal to 0. Okay, therefore the x cube derivative by using the formula of x raised to n, it is 3x square plus time y cube derivative is 3y square into derivative of y is there, that is dy by dx. Okay, that is here 3x x cube derivative is 3x square into also derivative of x with respect to x, but it is 1. Okay, either we write this or we just write 3x square, but here y cube means 3y square into derivative of y with respect to x we have to write here. Then plus time 4, and in order to differentiate this means here there exists a product of two function, use product rule u into v, that is whenever there is a differentiation of product of two function we use the rule of differentiation, that is the product rule. Then first function into derivative of second plus time second function into derivative of first function into derivative of second plus second into derivative of first is equal to 0. Okay, we differentiate this is 3x square plus 3y square into this dy by dx plus multiply this 4 inside, that is 4x cube into this dy by dx plus this 4 into this x cube derivative is, that is 4y into this x cube derivative is 3x square, okay, is equal to 0. Then here we have to find the value of dy by dx, that is collect this dy by dx term in one in bracket and this remaining term in other bracket. Okay, that is 3y square into this dy by dx plus time this 4x cube into this dy by dx plus the next term is 3x square. Okay, we write here 3x square plus time this 4 into 3, that is 12 x square y is equal to 0. Then we, in order to find the value of dy by dx, we take this dy by dx as outside, means 3y square plus this 4x cube, this 3y square plus this 4x cube into this dy by dx is equal to, compare this term is equal to 0, means we get minus time 3x square plus time 12x square y, that is minus sign is here, we take minus sign when we compare is equal to 0, then we get minus time from whole the term we take minus sign as a outside. Therefore this dy by dx is equal to, in order to find dy by dx we have to make the coefficient of क्या चाहिए, dy by dx coefficient 1 चाहिए, तो we divide this term to hold the equation, means here divided 3y square 4x cube get cancelled and here is divided 3y square plus 4x cube, or transfer this term, it is multiplicative here, when we transfer here to right hand then it is divided.
Therefore dy by dx is equal to minus time this 3x square. Here we take common term as outside, that is 3x square is a common term, we take 3x square as outside, remain is inside 1 plus 4y divided here 3y square plus time 4x cube, which is the value of derivative. मतलब हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड बाई डी का कोफिशिएंट 1 चाहिए, देन वी डिवाइड दिस टर्म टू राइट हैंड को डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस टाइम 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई डिवाइडेड दिस टर्म, बट यहाँ पे कौन सी टर्म कॉमन है, टेक कॉमन टर्म आउटसाइड, 3x स्क्वायर कॉमन टर्म है, टेक इट आउटसाइड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 प्लस 4y डिवाइडेड 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, विच इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव. इन ऑर्डर टू फाइंड dy by dx फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट किया d dx ऑफ दिस x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू दिस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 81. तो राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट इस टर्म सेपरेटली d dx ऑफ x क्यूब प्लस टाइम दिस d dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस टाइम दिस d dx ऑफ x y स्क्वायर, और नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d dx ऑफ y क्यूब, और यह कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0. देन हियर x क्यूब तक का डेरिवेटिव क्या है, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ x रेज़ टू n 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 है. ओके, प्लस टाइम या फिर इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हियर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज करना है. देन अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड plus second into derivative of first. Okay, then next term also here use a product rule, that is first function into derivative of second plus second into derivative of first plus time this y cube का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज dy by dx का dx. ओके, यार 3x x क्यूब का डेरिवेटिव क्या मिलता है 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज देयर बट इट इज 1. ओके, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट हियर, वी डायरेक्टली राइट ओनली 3x स्क्वायर, बट हियर डेरिवेटिव ऑफ y एग्जिस्ट, दैट इज 3y स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy by dx, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. ओके, देन वी सेपरेट आउट द टर्म ऑफ dy by dx. Okay, then this 3x square here x square into this dy by dx term plus time y into ये x square का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x प्लस x into y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2y अगेन into डेरिवेटिव ऑफ दिस y मतलब dy by dx प्लस y स्क्वायर x with respect to x डेरिवेटिव क्या है 1 है प्लस टाइम दिस 3y स्क्वायर into this value of dy by dx. Then we separate out here is equal to 0 is there, right hand का डेरिवेटिव 0 है. Then we separate out this dy by dx term, dy by dx, here also dy by dx term. Okay, then x square, take this dy by dx from this outside, then here also take dy by dx outside, remain is here 2xy plus time here from this take dy by dx outside 3y square, then remain is dy by dx, and then next remaining term is 3x square in the other bracket, then next here 2xy plus here y square. Compare is equal to 0. When we compare this term is equal to 0, in order to find dy by dx, this is equal to minus time. Then x square plus 2xy plus time 3y square into this dy by dx. Then compare whole this term is equal to 0. We know that it is minus time. From whole this term we take minus sign is outside. Then 3x square plus 2xy plus time y square. In order to find dy by dx, we have to divide this term to hold the equation or transfer this term to right hand, then it is divided. Okay, then dy by dx is equal to क्या मिलेगा dy by dx की वैल्यू माइनस टाइम 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर क्या किया डिवाइड किया दिस टर्म से होल द इक्वेशन को डिवाइड किया और ट्रांसफर दिस टर्म टू राइट हैंड, देन हियर इज मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे आने से ये डिवाइड हो जाएगी. तो डिवाइडेड क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square. Then the value of derivative is dy by dx is this one. Okay, which is the value of derivative. Question number second, find dy by dx find out करना है. तो डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को d dx ऑफ y e raised to x प्लस
डी डी एक्स ऑफ सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म dy by dx as use product rule u into v, that is first function into this derivative of e raised to x plus e raised to x into this derivative of y with respect to x, plus for the same thing rule apply for the next one, product rule, that is first function into derivative of e raised to y plus e raised to y into derivative of x with respect to x, and ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0। तो y वी नो दैट e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x ही होता है, प्लस e raised to x into this dy by dx टर्म, प्लस दिस x e raised to y का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, इनटू y का डेरिवेटिव मिलेगा dy by dx, प्लस दिस e raised to y और x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, x with respect to x 1 is equal to 0। तो हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, तो भी सेपरेट आउट dy by dx की टर्म सेपरेट आउट की, तो e raised to x टेक कॉमन dy by dx फ्रॉम दिस, हियर आल्सो dy by dx, तो x e raised to x प्लस x e raised to y, कॉमन टर्म क्या है, dy by dx, रिमेनिंग टर्म क्या है, y e raised to x और यहाँ पे x यहाँ पे e raised to y, okay, from this two term we take dy by dx outside, remain is y e raised to x plus e raised to y is equal to 0। तो dy by dx फाइंड आउट करना है, we compare this term is equal to 0, तो e raised to x plus x e raised to y into this dy by dx is equal to 0 से कंपेयर किया तो माइनस टाइम, टेक माइनस साइन आउटसाइड, y e raised to x plus e raised to y, ओके, देन डिवाइड दिस टर्म से डिवाइड किया, तो dy by dx इन ऑर्डर टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx, तो डिवाइड दिस टर्म टू लेफ्ट बोथ द इक्वेशन, दैट इज होल द इक्वेशन, डिवाइड दिस टर्म और ट्रांसफर दिस टर्म टू राइट हैंड, देन इट इज डिवाइडेड, देन dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस टाइम y e raised to x प्लस e raised to y डिवाइडेड क्या है, e raised to x plus x e raised to y is the value of derivative. The next one example, same thing process apply, follow over this exercise questions. Then first what we have to find dy by dx, but here function raised to function form is there, मतलब f of x raised to g of x or x raised to x or x raised to y, when there exists function raised to function we take log on both sides, that is which this concept already we have studied in the derivative of logarithm, okay, then here function raised to function, then to differentiate this, that is directly differentiation is not possible or it is not simple, to differentiate it directly, for that we first simplify this term into the simple form by taking log on both sides, which we have studied logarithmic differentiation, then taking log on both sides, after taking log what we get, log x raised to y is equal to log e raised to x minus y, then here log a raised to m form means we get log a raised to m और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, m into log a, तो अगर ये रूल यूज किया तो क्या मिलेगा, y इंटू लॉग एक्स, और दिस इज ऑल्सो ये भी क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू लॉग ए, अगेन यहाँ पे वन सिंप्लीफिकेशन यूज करना है, दैट इज लॉग e, और लॉग का बेस ऑलरेडी क्या होता है, e होता है, और लॉग e टू बेस e की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये दिस वैल्यू बिकम्स 1, ओके, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो रिमेनिंग क्या है, बनली x माइनस वाई, ओके, तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है, रिमेनिंग x माइनस वाई, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, फर्स्ट सिंप्लीफाई इंटू सिंपल फॉर्म, आफ्टर दैट डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, तो डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, ये वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, ओके, देन डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट हियर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज देयर, मतलब क्या यूज करना है, u इंटू v प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, तो dx अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, dy by dx फाइंड आउट करना है, तो सेपरेट आउट करेंगे dy by dx की टर्म, यहाँ पे क्या है, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स हमें पता है, देन लॉग एक्स इंटू dy by dx, यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग 1 माइनस dy by dx, तो सेपरेट आउट dy by dx की टर्म सेपरेट आउट करेंगे, तो ट्रांसफर दिस राइट हैंड टर्म माइनस dy by dx की टर्म राइट लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मिलेगा, दिस
dy बाई डी एक्स ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड को तो प्लस टाइम होगा एंड दिस y अपॉन एक्स y इंटू वन अपॉन एक्स मतलब y अपॉन एक्स, इसको क्या ट्रांसफर किया राइट हैंड को तो क्या मिलेगा y माइनस y अपॉन एक्स। तो log x dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, इनमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन टर्म लेंगे तो log x प्लस 1 आउटसाइड इज dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है अगर ये हमने राइट हैंड को ट्रांसफर की तो क्या मिलेगी 1 अपॉन टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इनटू दिस इज डिवाइडेड मतलब 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स दैट इज log x प्लस 1। ओके, जस्ट वी हैव सिंप्लीफाई। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर को क्या मिलेगा x माइनस वाई, डिनोमिनेटर को x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स विच इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। देन सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, हियर xy is equal to log of xy. Then to differentiate और देन टू फाइंड dy बाई डी एक्स वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ xy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ xy। तो इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस xy मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ xy अगेन सेम थिंग वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल u इंटू v। तो x इंटू dy बाई डी एक्स y डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन xy, यहाँ पे क्या अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y plus y into derivative of x. Okay, then x into dy by dx plus y is equal to 1 upon x 1 upon xy into this x dy by dx remain as it is plus y and this x with respect to x क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, then in order to find this dy by dx we separate out the term of dy by dx. Before this we multiply this 1 upon xy to this term as well as this term separately. Then this x into dy by dx plus y multiply this term inside. तो अगर हमने इस term को multiply किया x डिवाइडेड एक्स वाई तो एक्स एक्स कैंसिल होगी, क्या रिमेनिंग इज 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमने इस टर्म से 1 अपॉन एक्स वाई से दिस when we multiply this 1 upon xy to y तो y and y cancel out होगा, क्या is the remaining is only 1 upon x term is remain. Then this separate out this dy by dx term, here also dy by dx term, transfer this term to the left hand, then x into dy by dx minus 1 upon y, this become negative minus 1 upon dy by dx. here 1 upon x है, ट्रांसफर किया दिस टर्म को राइट हैंड से तो माइनस वाई मिलेगा। देन टेक dy by dx आउटसाइड, here क्या रिमेनिंग x minus 1 upon y is remain into dy by dx is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो xy 1 minus xy divided by x is there. Then this dy by dx here x minus 1 upon y dy by dx is equal to this one. तो अगर हमने इसे when we cross multiply this then xy minus 1 divided by y, then transfer this term to the right hand. When we transfer then it is reciprocal of this. Okay, that is y upon numerator goes to denominator and denominator goes to numerator, मतलब dy by dx is equal to this term into क्या मिलेगा y divided xy minus 1. Okay, then in order to cancel out the same term 1 minus xy minus 1, that is either from the numerator take minus sign outside or from denominator take minus sign, any one of this. From if we take from denominator minus sign is outside, then it becomes minus time 1 minus xy, and then this term and this term get cancelled, the remain is y upon x and this minus sign, that is minus y upon x, which is the value of derivative. Next one example, solve the following. What result is required? We have to find dy by dx is equal to y upon x. We have to show that this result. Then we are given x raised to 5 into y raised to 7 is equal to x plus y raised to 12. Then first we have to simplify this term. Then to simplify this term we use a logarithm, result of logarithm, that is take log on both sides. Okay, first we take log on both sides, that is in order to simplify first this term and then we differentiate easily. Okay, then taking log on both sides, here use the properties of or use the laws of logarithm, that is log x raised to 5 into y raised to 7 is equal to log of x plus y raised to power 12. Then we know the properties of logarithm, that is log a into b, that is log a into b is log a plus log b. Or second property we have to use here, log a raised to m is m into
log a. Okay, we apply this property. Then what we get here, this has a term, this has b term, a into b become log a plus b, that is log x raised to 5 plus log y raised to 7 is equal to log of x plus y raised to power 12 is there. The next property, log a raised to m becomes m into log a. Then this has 5 into log x. Then this has 7 into log y. This has 12 into log of x plus y is there. And then we differentiate. That is, here we convert this term into simple form and then we differentiate easily. Then differentiate with respect to x. Then this 5 as a constant into derivative of this log x plus this 7 as a constant into this derivative of log y is equal to this 12 as a constant into this derivative of log of x plus y is there. Then differentiate this 5 log x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या है 1 अपॉन x प्लस 7 log y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 अपॉन y into this derivative of y with respect to x because y is a composite function of x. Then this 12 log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x plus y into this derivative of x plus y term. Okay, then this 5 upon x plus ये क्या मिलेगा 7 upon y into this dy by dx is equal to this 12 divided x plus y और ये डेरिवेटिव क्या मिलेगा x with respect to x 1 plus dy by dx. हमें क्या फाइंड आउट करना है dy by dx फाइंड आउट करना है. तो सेपरेट आउट dy by dx की टर्म. First 5 upon x plus this 7 upon y into this dy by dx. Then multiply this 12 upon x plus y to this term as well as this term separately as 12 upon x plus y plus 12 upon x plus y into dy by dx. तो दिस टर्म ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड को और दिस टर्म ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड को. तो 7 upon y and this minus 12 upon x plus y from both the terms से dy by dx को कॉमन लेंगे. Okay, मतलब this 7 upon y and this when we transfer here it becomes negative and then from this term and this term that is 7 upon y dy by dx already is there. When we transfer here we get 12 upon x plus y into this dy by dx. So from these two terms we take dy by dx outside, remaining 7 upon y minus 12 upon x plus y और राइट हैंड को क्या है 12 divided x plus y ट्रांसफर की 5 upon x to minus 5 upon x is there. Okay, then this simplify this taking cross multiplication 7 into x plus y minus 12 into y is there divided y into x plus y into from whole this term dy by dx is equal to राइट हैंड की टर्म सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12x minus 5 into x plus y divided x into x plus y. Okay, then this has 7x plus 7y minus 12y divided y into x plus y into from whole the term there is dy by dx. और राइट हैंड को क्या है 12x minus 5x minus 5y divided here x into x plus y. तो कैंसिल आउट करेंगे कॉमन टर्म 7x is remain 7y minus 12y remain is here minus 5y. Okay, we write here that is this 7x plus 7y minus 12y remain is minus 5y divided here y into x plus y into this dy by dx is equal to राइट हैंड को क्या है 12x minus 5x remain is 7x minus 5y divided here x into x plus y is there. Okay, then dy by dx is equal to we transfer whole this term to right hand, then it is that is reciprocal of this, as denominator goes to numerator and numerator goes to denominator. Then 7x minus 5y divided this x into x plus y into this y into x plus y divided 7x minus 5y. Then cancel out the common term, this get cancelled, x plus y. Then remain is dy by dx is equal to y divided by x, which is the required value of dy by dx. Okay. Question number 3rd, second one, if log of x plus y is equal to log x into y plus a, then show that this dy by dx is equal to minus y square divided x square. We have to do this result. Then same thing, we differentiate
with respect to x, then differentiate with respect to x, then d dx of this log of left hand term is and right hand term x plus y is equal to this d dx of separately differentiate किया x y plus this d dx of constant term a. तो log का डेरिवेटिव क्या है हमें पता है 1/x plus y इनटू क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म x plus y ओके इज इक्वल टू log का क्या है 1/xy इनटू दिस डेरिवेटिव ऑफ xy ओके एंड कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है ठीक. तो दिस 1/x plus y इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इन प्लस dy बाई dx मिलेगा इज इक्वल टू 1/xy और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए u इंटू v दैट इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ओके. Then multiply this term to this and this separately in order to separate out the term of dy by dx. The 1/x plus y plus this 1/x plus y into dy by dx is equal to multiply this term that is numerator is x divided xy into dy by dx plus this y divided xy into dx upon dx का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 है. Then cancel out the common term y the remaining क्या है 1/x plus y plus 1/x plus y into this dy by dx is equal to यहाँ remaining is 1/y into dy by dx plus यहाँ पे remaining क्या है 1/x. Then separate out this dy by dx की term तो transfer this term to left hand then 1/x plus y dy by dx minus 1/y into dy by dx is equal to this 1/x transfer की left hand को to then right hand transfer this term to right hand 1 minus time 1/x plus y okay. Then take this dy by dx as outside तो क्या है 1/x plus y minus 1/y into this dy by dx is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into x plus y minus x into 1 that is minus x divided ये क्या है x into x plus y ठीक है. Then here also take cross multiplication y minus this x plus y divided this x plus y into y is equal to into this dy by dx is equal to क्या है cancel out this common term remain is y divided x into x plus y is there. Then here also मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से तो क्या है रिमेनिंग y माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है रिमेनिंग y डिवाइडेड x इंटू एक्स प्लस वाई minus y plus y get cancelled remain is minus x upon this term therefore dy by dx is equal to this y upon x into x plus y and when we transfer this term to the right hand then it is reciprocal is y into x plus y divided denominator is here only minus x तो this x plus y cancel out हुआ तो dy by dx is equal to क्या है remaining this y into y square और denominator को क्या है x into minus x मतलब minus x square तो minus time x square तो dy by dx की वैल्यू क्या मिली dy by dx is equal to minus y square upon x square. Then in order to find dy by dx differentiate करेंगे with respect to x तो डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म सेपरेटली e raised to x plus डेरिवेटिव ऑफ e raised to y is equal to this derivative of e raised to x plus y okay. Then e raised to x का डेरिवेटिव हमें पता है e raised to x e raised to y का क्या है एक्सपोनेंशियल into this derivative of y is equal to again एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल into this derivative of x plus y that is a composite function then e raised to x plus e raised to y into this dy by dx हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है then here e raised to x plus y
तो डिफरेंशिएट किया सेपरेटली, x का क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x पता है 1, y का dy बाय dx। तो dy बाय dx फाइंड आउट करना है, सेपरेट आउट करेंगे टर्म dy बाय dx की e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया e रेज़ टू x प्लस y से इनसाइड को, तो 1 इंटू दिस e रेज़ टू x प्लस y, सेकंड टर्म क्या है e रेज़ टू x प्लस y इंटू dy बाय dx। तो this dy by dx and this dy by dx, okay, we have to find dy by dx, then separate out this dy by dx term, transfer this term to right hand, then e raised to y dy by dx, और ये राइट हैंड को ट्रांसफर किया तो माइनस टाइम e raised to x प्लस y इंटू dy by dx, और लेफ्ट राइट हैंड को क्या बचेगा e raised to x प्लस y, ट्रांसफर की दिस राइट हैंड को माइनस टाइम e raised to x, okay, then take dy by dx as कॉमन टर्म आउटसाइड, तो e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x प्लस y, ओके, इनटू क्या है रिमेनिंग dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या है e रेज़ टू x प्लस y माइनस e रेज़ टू x, तो सेपरेट करेंगे e रेज़ टू x प्लस y की टर्म e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y, ओके, इनटू दिस माइनस साइन इज मल्टीप्लिकेटिव इंटू dy बाय dx is equal to same thing e raised to x plus e raised to y minus e raised to x. So when we multiply minus sign inside, that is e raised to y minus e raised to x minus e raised to y, okay, into dy by dx is equal to e raised to x plus e raised to y minus e raised to x, e raised to x cancel होगा, और here also this e raised to y cancel आउट होगा, तो dy by dx is equal to क्या है रिमेनिंग dy by dx मल्टीप्लिकेटिव इज माइनस e raised to x, ओके, एंड here remain is e raised to y, तो क्या फाइंड आउट करना है dy by dx, तो माइनस e raised to x dy by dx is equal to e raised to y is there, then transfer this term to right hand, तो dy by dx is equal to e raised to y divided minus e raised to x is there, तो डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में लेंगे तो माइनस हो जाएगी, ओके, देन दिस माइनस साइन एज इट इज e raised to y into this क्या होगा e raised to minus x to e raised to y minus x is there, therefore when we take this denominator term to numerator then it is e raised to minus x, तो dy by dx क्या होगा dy by dx is equal to minus e raised to y minus x is there, is the value of derivative.